जाएगा, full train loads जाएंगी, 2500 2600 tons per train, और ये जान छूट जाएगी from this inefficient transport और ये accidents on roads and all that. So that is how a good sort of transportation system is. Next करो. Shiriyar, next. Shiriyar? Shiriyar, आवाज आ रही है? जी सर, कर दिया। अच्छा, आप शरियार ऐसे करो ना, इधर आ जाओ यार। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इंटरमोडल और मल्टीमोडल, देन ईच मोड हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस and will be chosen on the basis of cost, capability and route. Now, how do you choose that? How should your container go by truck, or should it go by train, or should it go whatever? तो खैर वो तो by road on the land तो यही दो हैं. And then should it go by air? You just unstuff it, अपना cargo ले जाएं. But then इसमें जो the decision lies in looking at the costs, in how quick it goes, whether you want it to go quick. For example, you want to transport let us say 1 million tons of coal. You don't even think of the air, and you don't even think of other things, or trucks, even trucks. If it is going for some distance beyond 300 kilometers, you will start straight away think of the train. Why? Because it is meant, it has been built that way. और वो थोड़ा आगे जाके इनकी जो dynamics है वो देखेंगे. Next. Shiriyar, next. क्या इशू है बस. Shiriyar, next. सर हो गया नेक्स्ट. इधर नेक्स्ट नहीं आया मेरे पास. आप इधर क्यों नहीं आ जाते मेरे पास? आप इधर मेरे कमरे में आ जाओ, इधर से मैं आपको करता रहूं. अच्छा, देन अब जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कह रहा था ना, तो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द कंप्लीट बेसिक्स. ठीक है, सो दैट यू नो कि ये भी ट्रांसपोर्ट, दिस इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इनिशियली इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ह्यूमन पावर. व्हाट इज ह्यूमन पावर? 2 legs आपको दिए, अल्लाह ने मसल्स दिए, you can transport. And this, in this picture maybe you can see it, this man is transported planks. लोग करते हैं firewood ले जाते हैं, चीजें ले जाते हैं. सर वो सिस्टम से कर रहा हूं, मेरे सिस्टम पे लॉगिंग है. तो तुम, मेरी आवाज तुम्हें नहीं आती? आती है, थोड़ा नेट का इशू है, आवाज थोड़ी देर बाद. अच्छा, चलो चेंज भी तभी थोड़ी देर बाद हुआ. अच्छा, तो ये इट इज अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के जी शुरू से आ रहा है, इवन टुडे. Now walking, running, swimming, ये भी transportation के हिस्से हैं. Why? Because between 2 points you are moving all the time. Then in say in mountainous areas, यार ये जो नेपाल में for example ये mountaineers हैं, ये Sherpas जिसको कहते हैं, who carry goods mountaineering में, you can't take a vehicle out there, you can't take a motorcycle out there, or a car out there, or a jeep out there कि जी ठहर जाओ, we transport. So the human being is still being used as a means of transport. So in certain areas today, and it is supposed to be most efficient system. Shiriyar, next. Next. थोड़ा सा delayed response है, लेकिन ठीक है, चलें. अच्छा, now in the human powered, of course, if moving in a mountain, you don't need roads, or you don't need paths. So the infrastructure is minimum. Minimum infrastructure is required, and tracks and paths and bridle paths, and I've seen, frankly, I've seen this in Kagan. There used to be these paths made for humans, maybe it took 100 of years to have a path. Then people started using horses. That human made path, you would become a bridle path. Usko bridle path कहते थे. In the horses उसके ऊपर चलते थे. Or then gradually I've seen some of these, because one of my uncles was in the forest department. Those same paths then used to be turned into jeepable roads, छोटे road. Then they became normal roads. So ये होता है. This is how. But this in some countries in Europe you will find winding roads. You go to England, you will find winding roads. In the US you will find straight roads. Now in China, the new development, you just have straight roads.
whether there's a mountain or there's a river or whatever, tunneling and bridging and tunneling and bridging. But initially, the winding roads used to follow the old paths. आहिस्ता आहिस्ता develop हुए वो path ऐसे गया इधर गया उधर गया. So that is how. And as I said, muscle power is required, and porters are still even in railway stations, for example, and even in the airports, you find these porters. This is how human powered transportation is done. Unki gaadi se, from their car to the railway station to the carriage, or from your car to the sort of the terminal, aapka banda leke jata hai. So that is also a means of transportation. Next. And used today. I'm not talking of old, even today they're used. Sharia, next. Then we move on to animal powered transport. Animal powered transport, you can have bullock carts, you can have horses, you can have buffaloes, you have camels, you have donkeys. And these you can see even today. Even if you go to Lahore, I don't know whether I have lived in Lahore for maybe 10 to 12 years. So I used to see these camel carts coming in all the way from Kasur. They would travel all night. Early morning, they used to be in Lahore and driven by camel. And donkey carts, आजकल हर जगह पे है. Bullock carts, these bullock carts, driven by bullocks. I know a person in my own village who says that he would take salt from Rawalpindi right up to Srinagar. And he's talking of 40s and early 40s. And they would take salt, or they would bring back fruit, especially apples or ye cheezein, and bring these shawls and everything. So that was a kind of trading, but through bullock carts, and not very far away. 50-60 saal pehle ki baat hai. Donkey carts you see even today, masla nahi. And horse-drawn wagons, of course, you see tongas hai hamare here. So animal. Then pack animals. Pack animals may horses also, 4-5 horses draw a carriage. But then you will be surprised, in some parts of the world which are snow-clad all the year round, especially the Arctic and the Antarctic. Not Antarctic much because वहाँ population इतनी नहीं है, but in the Arctic countries, in between the Arctic Circle, in Norway में, Sweden में, in Alaska, in northern Canada, husky dogs are your sort of means of transport. Ajkal, of course, we've introduced the ski scooter, wo aa gaya, but maybe 50 years ago, 60 years ago, there was no other means of transport except your dogs. In Mefer, the best thing is that reindeer, which is a part family of a deer. Reindeers were also used for pulling sledges over the snow and ice. So then elephants, Thailand, you go there, in Vietnam, you go there. Elephants are used even today for transportation. They carry these cut logs or timber and all that from the forest. In South America, there is an animal known as the llama. It's some family of between a camel and a giraffe or between a goat. They carry a lot of things, and it is a good means of transport. Yaks, Nepal mein, even in places like Hunza and Khunjarab, you will find yaks, which is a cow kind of a animal. They use them. Oxen, donkeys, horses, of course. Next. So this is how it has evolved. But again, don't get me wrong, these are there now also. Even today, they're being used. Then machines came in. Mechanization started. And with mechanization, actually, there was a revolution in the transport industry, in the means of transport. How then people started talking of speeds. People started talking of delivery of bulk commodities, not a ton or half a ton, or they started talking of big, huge bulks in hundreds and thousands of tons. So then cars and of course wagons and buses and trailers and trucks and all kinds of things.
road pe hain, motorcycles, cycles, scooters, all these things. Then these are forms of mechanical things. Then in the mechanical thing, then you can of course have this division of passenger vehicles and freight vehicles. As I said earlier, for a freight in the sea, then you have a special kind of, for containers, you have a container ship. For oil carriage, you have these oil tankers. For different commodities, you have different kinds of freight wagons. But for the shipping, then it is a completely different ball game. Uske liye aapko, you need passenger liners, like in your World Cup that is going on, Football World Cup in Qatar. They have these passenger liners which have 1,500 to 2,000 to 3,000 rooms. It is like a floating hotel. So they've brought these ships there and they're using them as hotels for the for football fans. So it is a completely different world. They've got swimming pools out there, luxury. It is all luxurious, but made for passengers. And of course, on the roads, then you have these buses and you have different kinds of motorcycle, these vehicles, 4-wheelers and 2-wheelers and 3-wheelers. और हमारा जो पाकिस्तान में बदकिस्मती से वो चिंची आ गया, वो मेरे ख्याल में डिफाइंड भी नहीं है इस ट्रांसपोर्ट में, और वो हमें नसीब हो गया. Then there's this division of public transport and individual transport, private transport. The buses, public buses, and they have to be regulated. Then we have the railways, passenger railways, wo regulate honi. Then you have liners, you have airliners in the air. वो एक और चीज है. Next, just trying to, ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, ये flag कर रहा हूँ, so that your mind start working. And each one of them is very complicated. When you get into it, it becomes very complicated. But these are there in the transport sector. Then on the road, as I said, on land, there are two things. One is the rail-based, and one is your roads. Now, rail-based, again, when you look at rail-based transport, why is it there? It is there because of it can overcome that kind of friction, and it becomes reliable, very safe. It is very affordable and environment friendly. When you take a train load of if you can see this train coming with containers, these are now double deck containers and being pulled by 1 or 2 locomotives, or iske environment friendly hai, very safe, and it can go very fast with all this load of containers. I don't know, hundreds of tons. There are trains, freight trains in the world which carry more than 20,000 tons. एक ट्रेन, unheard of. हम 2,500 उठाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. These trains, there are trains which can carry 10,000, 20,000. Dedicated trains हैं उसको उठाती हैं. Then rail based, where does it come in? It comes in because there's a need for transportation of bulk. Bulk means बहुत ज़्यादा volumes में and long distance. And when I talk of long distance, मेरी अपनी definition जो पाकिस्तान railways में है, it is 300 kilometers beyond. Anything coming out of Karachi going to Hyderabad can go by road more efficiently. But anything going beyond Hyderabad, kam as kam, that should go by train. This is now my view. And generally 300 kilometer के radius में trucks should operate, and beyond that trains should operate. और ये दोनों for passenger or freight के लिए. हमारा जो the difference between a railway train and a bus is that we carry bulk. We carry the volumes of maybe 12 to 14 buses at one time. And you just need one locomotive, and at one time it gets out. You carry about 1,000 to 1,200 people, which is of course equivalent to many buses. And similarly trucks. So if this train you see in the picture, the amount of containers it is carrying, I'm sure they have done away with at least 200 trucks on the road. And imagine every truck using its own fuel, using its own driver, its own sort of assistant. बहुत बड़े खर्चे हैं. So this becomes very, as I said, reliable, safe and affordable. Then urban based mass transit system. अच्छा, ये तो फिर
अभी ठीक है वैसे? सर अब ठीक हो गई है सर। अच्छा अच्छा, जैसे हो ना मुझे बता दिया करो यार, ऐसे ना मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और आवाज नहीं आ रही। सर मैं आपसे तो पूछ अर्बन रहा था कि बेस, ये जो रेल सिस्टम है सर, हमारे पास इतनी कैपेसिटी की ट्रेन्स मौजूद हैं जो अब हैवी बल्क को मूव कर सके? हमारे पास देखो यहाँ पे ट्रेन्स नहीं, ट्रेन्स ये क्वेश्चन आपका, यू नीड टू सॉर्ट ऑफ रीफ्रेज इट. You should say, do we have motive power locomotive that can haul bulk? Yes, हमारी जो capacity है, it is limited to 2,400 tons. One locomotive, 3,000 horsepower, can haul 2,400 tons of cargo at 100 kilometers per hour. Speed भी एक factor आ जाता है. Now, if you want to add more to it, it cannot reach 100 kilometers per hour. Then you have to reduce the speed. But then our most optimal train is 2,400 kilometers, which can carry this kind of tonnage and go at least, at least 100, maximum of 100 kilometers per hour. In ML1, we were trying to upgrade this to 120 kilometers per hour, which is as good as any in the world, as good as any. कहीं भी दुनिया में इससे तेज freight trains नहीं जाती. And you don't need to run fast freight trains. सर आपने क्या बताया जी, था कि कितने टन लोड कैरी करता है? 2,400. Okay sir, thank you sir. 2,400. Now a passenger train, which is supposed to go at 110 or 120 kilometers per hour, उसका जो total tonnage है वो फिर कम होता है. It's about 800 tons. That is why it can accelerate and de-accelerate and go faster. Those locomotives are made that way then. But for freight trains, you don't need to run them very fast. So yeah. Then urban-based mass transit system. Now, when I say urban rail-based mass transit system can be by bus, this are BRTs, and they can be rail-based like your Orange Line, or the so-called, we are thinking of the revival of the KCR, Karachi Circular Railway. In Beijing alone, there are 16 or 18 lines similar to the Orange Line. In Berlin, for example, there are 300 railway stations which simply cater for the urban rail mass transit system. उनको move करती हैं, and they move very fast on the rail. In the urban areas, if a train can move you at 60 to 70 kilometers per hour, it is like you flying by air, frankly, in a city. In a city, you can't do more than 20 to 25 kilometers per hour. And if you sit on for example, I'm sure you must have seen the Orange Line. It just crosses all the cars and all the buses and everything. So because it has a dedicated right of way or uninfringed, with nobody can cross over it, so they go very fast, and it is a very, very efficient way. But then it comes in only, as I said, rail-based mass transit. The volumes have to be very, very big to introduce a rail-based mass transit system. And these are generally, the thumb rule is that any city which has a population of maybe 1 million people, it should have a rail-based mass transit system. 1 million people. Imagine हमारे पास Karachi है, which has 20 million, almost 18 to 20 million people. And we don't have a rail-based mass transit system there. Lahore is a city of 9 million to 10 million people. Luckily, we have one Orange Line. Lahore should be having at least 5 or 6 more of these railway lines. And the more you have, then only they become efficient, they become economically viable. Financially, economically viable. Then on the rail, we have these concept of suburban and intercity trains. Suburban means, for example, a train coming in from Nowshera into Peshawar. Short distance, 40 kilometers, 50 kilometers, up to 100 kilometers, maybe 110 kilometers. In South Korea,
The South Korean government, they had a policy, they made a policy decision which said that, okay, we will connect the entire country from south to north, from west to east. Within 6 hours, it should go be connected by trains. Within 6 hours. Now for that, then they had to go into high-speed rail, which is 300 kilometer plus, and anywhere you want to go, right from one end to there, it's less than 6 hours. उससे हुआ क्या है कि that the bigger cities like Seoul and Busan and all these places, people have started moving out of the big cities into the rural areas, and the rural areas are being developed as beautiful commercial centers. And how? Why? Because this train just takes 10 to 15 minutes to reach the other center. Now 10 minutes, 15 minutes is frankly no time for transit in a city. So they just sit onto the fast train, get into the city, apna office mein, go back. And this is what they've done in China between Beijing and Tianjin, 105, 130 kilometers, I think, 135 maybe. It takes 35 minutes. To be exact, 33 minutes. Sir, Now, excuse 33 me. minutes of transit time. So koi cheez nahi hai. You can work in Beijing and be back in half an hour in your home in Tianjin. So that is how the trains and the transport changes the lifestyles of people. It changes the way people live in cities. Or high rise, for you get them out into the rural areas, and this is how countries have developed. Sir, excuse me, sir. Why Question we are tha? not deploying, sir? Why we are not deploying more railway infrastructure in Pakistan, sir? ये तो वो आगे आएगा. I'm going to tell you what railways is later on, but this is a very innocent question, but the answer is very complicated. But the thing is, it's all about the intentions of the government, number one, the will of the government, the policy decisions, where do you want to invest, and basically it comes down to the piece of cake that you have. पैसे नहीं होते. You see, these things require a lot of money. So the government has priorities. They want to do. Ji? Sir, the government should have to pay attention on the railway sector, sir. It has to, and that is why they have taken up the ML1 project, upgradation of ML1. You are very right that railways has somehow been ignored for the past 40-50 years. At one time, when all the VIPs, they used to travel by train, so the railways was always in the forefront. It was one of the best services, frankly, and there was a lot of attention going on. But ये जहाज शहाज और ये गाड़ियां शाड़ियां और ये आगे गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं ना, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, उनका ध्यान हट गया है. But now they have realized that without a good, robust, a strong railway network in Pakistan, a country like Pakistan, had Pakistan not been geographically like this with Karachi ports in the south and Peshawar and the hinterland of Punjab and Lahore and Faisalabad or Quetta, agar is design mein Pakistan na hota with 13, 16, 15, 1600 kilometers of corridor, then I would have said, okay, you don't need a railway for a smaller country. You don't need frankly, a big railway for Singapore, or you don't need a railway for that matter, maybe in some places like Denmark or someplace. But here you do need it. So now that the government has realized they are going to spend a lot of money, but this money then has to be repaid. I am a great proponent of being financially viable. Ye zehn mein rakhe. There is no free lunch in the world. You have to, whether it is a loan, whether it is anything, you have to repay back. ये एक word होता है grant. ये याद रखना, grant वो होता है where people just give you money, they don't want a return on it. Okay, okay, यार आप गरीब लोग हैं, grant ले लें. But nobody will pay you a grant for railways development or motorways development or for that. What grant is a very small amount of money for some kind of social sector. आपके सैलाब आ गया, yes, they will give you a grant. आपकी बीमारी कोई आ गई, कोविड आ गया, कोई dengue आ गया, maybe for that they will give you a small grant. But no, this you have to do yourself, and the people are willing to give you loans. People are willing to give you some kind of lend you money
at a certain cost, that has to be repaid back. तो वो नहीं है कि जी आप कहें जी tomorrow you come up with some brilliant idea that we have a bullet train. Sir, I have a question, sir. रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है सर वो अटेंशन नहीं पे कर रही रेलवे पे सर? नहीं, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन तो अटेंशन इसलिए पे कर रही है बिकॉज योर एंटायर railways is more than 160 years old now, and it has been this way, designed this way for 160 years. The way the railways is running this old system, this is again remarkable, frankly. The Chinese used to visit us. They were actually surprised at the way we are sort of making use of our assets. It could be better, of course. वो और बातें हैं. How can you make it financially viable? किस तरीके से आप करेंगे? तो वो फिर आगे when I go into railways, then you will realize. And when I talk of railways, you will see that you can duplicate it in the shipping sector, you can duplicate it on the roads, you can duplicate it in the airways. हर जगह पे यही हाल है. It is misuse and bad use of the available assets. And what are the assets? I keep saying infrastructure and the rolling stock and the vehicles. ये गलत इस्तेमाल हो रहा है. जिस चीज के लिए बने हैं उसके लिए नहीं इस्तेमाल होते. ठीक है ना? And then most of the time you don't need a lot of things. You don't need a train going in from maybe Malakwal to Bhera, for example. वहां पे रोड बना हुआ है 100 किलोमीटर के लिए. Why do you want to take a train at 30 kilometers per hour? Don't take it. इतना बड़ा इंजन है, इतना पैसे खा रहा है, इतना फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, उस पे स्टाफ बैठा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बड़ी है. And the track is not good. If you invest in that track, it will go into billions of rupees. तो ठीक है, if there is a infrastructure which the government has constructed, इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ, you badly need a Ministry of Transport where all these things can be coordinated. कि किसको देना है? Next. सर मैंने एक और चीज सर रेलवे में देखी है कि सर आप सर ये देखिए कि जिस तरह सैटरडे संडे तो रश होती है ना सर रेल पे ना, मतलब ट्रेन पे, तो सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सर हमारे पास ट्रेन पे इतनी रश नहीं होती, कॉस्ट वही पड़ रही होती है ट्रेन को, पर लोग इतना ट्रैवल नहीं करते. क्यों सर? जी ये बात सही है. देखे ना उसमें ये अब नाउ दिस कम्स इनटू द डेली जो आपके एसेट का इस्तेमाल मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो उसको ऑपरेशंस कहते हैं. ऑन सैटरडे संडेज व्हाट यू कैन डू इज you can add number of coaches to the train. वो इस्तेमाल हो जाएंगी. और मंडे और जिस दिन आपको नहीं है, then you can reduce 1 or 2 coaches from the train और उसकी आपके खर्चे कम हो जाएंगे. लेकिन बात यह है कि अगर आपकी ये रेलवेज इज सच दैट वो फिर संडे मंडे को नहीं देखता, बिकॉज इट इज लॉन्ग डिस्टेंस, पीपल आर ट्रेवलिंग एनीवे. बहुत कम लोग फिर वीकेंड्स और इसको देखते हैं. लेकिन यू आर राइट, अब वीकेंड्स पे, फेस्टिवल्स पे, ईदों पे फिर रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाती हैं. 10-10, 15-15 ट्रेनें हम चलाते रहे. हमारे जो ये फॉर एग्जांपल रायगढ़ में इज्तिमा होता है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलती. कहीं मेला हो रहा है, स्पेशल ट्रेन चलती. तो वो हो सकता है, व्हाई नॉट, और होना चाहिए. अच्छा, देन ऑन द मशीन साइड वी कम टू द वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट. अब ये दिस इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, in countries like Germany, in countries like Holland, in countries like Belgium वगैरह यूरोप में जाएं, even if you have a small canal in front of your house and you have your own boat, there are 100% chances that you can take that canal and keep on going, you will hit the sea. They're all connected. And water, inland water transport is a very, very efficient way of carrying goods and people, especially goods. ये टग्स होती हैं और बोट्स होती हैं, वो सामान ले जाती हैं, and छोटा सामान उठा के then they take them to the bigger ports और वहां ले जाती हैं. So inland water transport very, very important. And let me again go back into history. ये आपके लिए बड़ी न्यूज होगी कि when the railways were introduced in this part of the world, अंग्रेज के जमाने में, दिस इज मिडिल 1862 में फर्स्ट रेल आई थी. सो 1862 देयर वाज अ रेलवे लाइन फ्रॉम कराची टू कोटरी. दिस वाज अबाउट 180 kilometers. Then later on in 1870s, 80s,
ऐड हुआ फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर, इसको कहते थे पंजाब रेलवेज। देन देयर वाज अ रेलवे लाइन फ्रॉम लाहौर टू लाला मूसा एंड देन ऑन टू पेशावर, ये 1884 में तकरीबन कंप्लीट हुई थी। इसको वो कहते थे PNSR, पंजाब नॉर्दर्न स्टेट रेलवे। फिर ये नाम चेंज होते रहे एंड आई विश सम ऑफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी। आप गोलरा आए, ये एक म्यूजियम है जिसमें मेरी काफी कंट्रीब्यूशन है, ये चीजें आपको वहाँ नजर आएंगी। देन ये जो लाइन कनेक्ट हुई लाहौर को पेशावर के साथ, लाहौर को मुल्तान के साथ, और वहां से कराची कोटरी। कोटरी यूज्ड टू बी नोन एज कोटरी बंदर। बंदर मींस कराची, कोटरी पोर्ट। ये जो हैदराबाद का जगह है इंडस के ऊपर, ये पोर्ट था एक्चुअली। अभी भी उसका नाम हमारे रेलवे के उसमें कोटरी बंदर कहते हैं उसको। तो मुल्तान एंड कोटरी के बीच में रेलवे लाइन नहीं थी। एंड लॉट ऑफ शिप्स, एक्चुअल शिप्स इसको कहते थे, बड़े बड़े, इसको फ्लोटिला कहते थे, फ्लोटिला। फ्लोटिलाज यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान कैरिंग कॉटन, बल्क कॉटन, और ये जाके वहाँ अनलोड होते थे कोटरी में। ये आई एम टॉकिंग ऑफ 1860s 70s 80s 80s के बाद फिर वो रेलवे लाइन बिटवीन कोटरी एंड मुल्तान कनेक्ट हुआ। तो ये शिप्स जाती थी ऑन द इंडस। सो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडस को रास्ता बना के ना, इसकी ड्रेजिंग करके विंटर्स में, तो ये शिप्स कॉटन ले जाते थे एंड दे यूज्ड टू गो अप टू कोटरी, अनलोड देयर। वहां से फिर बाय ट्रेन इट यूज्ड टू गो टू कराची पोर्ट, और वहां से मैनचेस्टर जाते थे। तो मुल्तान एंड कोटरी वर नॉट कनेक्टेड। ये तकरीबन बन जाता है कोई 400-500 किलोमीटर ज्यादा, इफ नॉट मोर। तो ये इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन वाज देयर। ये खत्म कैसे हुआ? आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ दैट बराजेस केम अप, इरिगेशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हो गए, और ये पानी को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। द रिवर्स वेंट ड्राई इन द विंटर्स। हमने ये सोचा ही नहीं कि यार ये बड़ा अच्छा एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये व्हेन आई वाज GM रेलवेज, देयर वाज अ प्रेजेंटेशन बीइंग मेड टू द प्रेसिडेंट. We had to go and present a railway presentation on some topic. I was told that some gentleman who had been an admiral in the Navy, retired admiral, he had come and made a presentation on inland water transportation. He said we can sort of take ships and boats right up from the Turbela on to Karachi on the Indus. ये बड़ी बात थी। खैर, अब who's going to do it, how we are going to do it, a lot of money is required, but I'm just telling you that it used to be done. कोई ऐसा मसला नहीं है। In the Indus, when it reaches Mianwali and when it opens up to up in the Punjab plains near Kalabagh, it becomes 9 to 10 kilometers wide. Dia Khan and Bakar, ये आप जाएं तो बीच में दरिया ही है। It is 10 to 12, 15 kilometers wide. तो दरिया used to be, these rivers used to run wild. There were no dams, there were no barrages. तो उस जमाने में रेलवे बनी है। Just imagine, as an engineer, as engineers, you should think of this. And all those floodings, ये जो आज floodings होती हैं, ये उस वक्त भी floodings होती थी. But they would, construct all these big bridges, Atak Bridge and Ravi Bridge and Chenab Bridge, और ये सब wild बहते थे. There was no stopping. उस वक्त inland transportation, water transport होती थी. Then of course we have ocean water transport. उसमें ocean liners भी हैं, passenger liners हैं, beautiful. आजकल तो you just go on to देखने के काबिल container trains or tankers, oil tankers, or different kinds of cargo ships and huge cargo ships, some even carrying 2 million tons. हैरान हो जाता है. Of course, there also Pakistan National Shipping Corporations, we have been left behind. वो हम नहीं कर सके मुकाबला दुनिया का in shipping. Passenger liners, as I already said. So yeah, this is a world in itself, and to enter this world of sea transportation, ये फिर इसकी jargon और है, इसकी language और है, इसकी capacities और है. Bulk transportation है, huge bulk transportation, और ports की बातें हैं, ships की बातें हैं, unloading की बातें होती हैं, stevedores की बातें होती हैं, cargo ships हैं, passenger ships हैं, different किस्म की चीजें. For oil, you go to Karachi terminal, Karachi port, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट ऑयल के लिए बना हुआ है,
ऑयल टैंकर शिप्स आती हैं, उसके पाइपलाइंस में कनेक्ट हो जाती हैं, इधर आती हैं, फिर वो स्टोरेज में जाती हैं. इसी तरह डिफरेंट कार्गोज डिफरेंट तरीके से हैंडल होते हैं. नेक्स्ट. देन ऑफ कोर्स मशीन्स की बात कर रहे हैं तो when people started flying, Wright brothers और ये और वो, so the airplane came in and airplane का, then we have these passenger carriers, we have cargo carriers, then of course to facilitate them we have these air terminals जिसको हम airport passenger के लिए कहते हैं, और cargo handling terminals for cargo. Now everyone, if you ideally everyone would like to take their cargo by air to Europe and to America, but then it is very costly. And why is it costly? Because to overcome that friction between the air and the taking off के बाद वो बहुत बड़ा खर्चा होता है, जहाज का बहुत बड़ा खर्चा है, तो वो अफोर्ड नहीं होता है. That is why it is very expensive then. I wish दुनिया is moving forward, जहाज आ जाएंगे, maybe they are cheaper then. But till now, it is very, very expensive. But for passengers, of course, long distance, people prefer to travel by air, at least for maybe 100 kilometers, especially in China. Sorry, 1,000 kilometers. China में Beijing to Shanghai, people prefer to go by train, high-speed train, rather than the airplane. So 600 to 1,000 kilometers, rail, transport, and air, they compete. Otherwise, in Pakistan, Railways has no competitive overlap with PIA, frankly, with the airlines. क्योंकि हमारा वो transit time ज़्यादा है और airplanes can go much faster. Yes, once ML1 is upgraded, Lahore and Islamabad, you will not find anyone going by air then. कोई खास किस्म के लोग होंगे जो अपने छोटे जहाज में या उसमें आ जाएंगे. Otherwise, they will all go by train. And your motorway is limited to 4.5 hours. So ये trains will always be preferred for these distances. Next. ये आपको अभी you must be realizing कि यार ये कितना हर दुनिया हर complicated है. Transport sector तो है, but each one of them is have their own dynamics, have their own engineering, have their own then people who manage it. और बड़ा specialized काम है. Then modes of pipelines transport है. As I said, oil is being transported. आपके जो I've been chairman of the Khyber Pakhtunkhwa Oil and Gas Company, तो oil and gas का भी मुझे कुछ पता है थोड़ा सा. तो वहाँ से right from the rigs जहाँ से पेट्रोल ऑयल निकल रहा है, एक्सप्लोरेशन हो रही, वहां से पाइपलाइन के थ्रू यू टेक द थिंग टू द रिफाइनरीज और पाइपलाइंस में ऑयल जा रहा है. देन गैस ट्रांसपोर्टेशन, सुई गैस आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट इज अ वेरी वेरी एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट. एंड देन वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल. पाइपलाइंस में भी आ रहा है, ट्रकों से भी आ रहा है. अगेन सिंस आई एम अ रेलवे मैन, मैं थोड़ी कहानियां भी आपको डालता रहूंगा. आपका entire ऐसे sections हैं on Pakistan Railways where people were dependent on drinking water on the train. Even animals used to wait for the trains कि जी train will come at this time and they would come and gather at the railway station और उनको फिर पानी डाला जाता था. This is from there's a section known as Quetta Taftan. It's about 600-700 kilometers. Most of it is very barren. And it's more than a desert, और desert से भी खराब है वो. ऐसे लगता है कि अल्लाह ने जमीन, लोग वहाँ कहते थे, I've been there, वो कहते थे कि जी अल्लाह ने जब जमीन बनाई तो उसको जब सारा जो एक्स्ट्रा चीजें रह गई वो उन्होंने इस इलाके में डंप कर दी. ऐसी जगह है जहाँ पे पत्थर भी काला हुआ हो, तो इट लुक्स लाइक अ मून लैंडिंग. खैर वहां पे पानी नहीं है, तो द रेलवे यूज्ड टू रन वाटर ट्रेन्स, अभी तक चल रही है. और वो फिर पूरे गांवों को वहाँ टैंक्स हैं, उनमें पानी जाता था और ये वाटर ट्रेन चलती थी. आपका कराची में सारे टैंकर से पानी आता है. देन सीवरेज इज ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस ऑफ कोर्स. तो ये पाइपलाइंस, बात तो पाइपलाइंस पे हो रही है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन और सीवरेज ट्रांसपोर्टेशन. गैस सीवरेज बाय द वे इज अ बिग कमोडिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रेंकली. कराची में गार्बेज, सीवरेज तो खैर पाइपलाइन से जाते हैं, बट गार्बेज अगेन इज अ ह्यूज कमोडिटी.
the city has to look at it. कैसे जाएं? I remember we used to run garbage trains out of Karachi into Marshalling Yard area. ऊपर एक जगह है, I've forgotten the station name, जंगशाई के पास. वहां तक ट्रेन जाती रही. The provincial government used to pay us for it, and we used to make a lot of money from it. Next. Then अभी I'll come to the transport sector कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है. We talked of all these modes and different modes of transport, और उसको देखा कि अंदर क्या है. Now in Pakistan, transport sector is a very huge sector. It contributes, ये 14% यहाँ तो लिखा हुआ है ना, but I personally feel ये ज्यादा है. ये तो वो है जो कि accounted for है. Lot of things are not accounted for. हमारी country में we are not very well documented. हमारा हिसाब किताब इतना अच्छा नहीं. So frankly, I would say कि जी 15 to 20% of the GDP comes from transport sector. So it is a huge department, a huge sector of the economy. And employment ये दे रहा है 6-7% को लोग employed है. Inland freight traffic handled 140 billion ton kilometers. हमारे पास जो सामान आ रहा है 140 billion ton kilometer. Do you know what, by the way, आपको टन किलोमीटर का पता है क्या चीज है? Anyone? Sir, tons means 1000 kg per kilometer. नहीं. What? अच्छा, मैं ये थोड़ा सा ये आपको बताना भूल गया कि इन ट्रांसपोर्ट आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, दो चीजें, यूनिट्स होती हैं जिससे आप गेज करते हैं कि कितने वॉल्यूम्स हैं. एक है टन किलोमीटर फ्रेट के हिसाब से, और एक है पैसेंजर किलोमीटर, कि आपका पैसेंजर कितने किलोमीटर जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के देनी है तो ये दो होते हैं. तो टन किलोमीटर मींस कि एक टन कितने किलोमीटर जा रहा है. कराची से एक टन आपने लोड किया ट्रेन के ऊपर, वो एक टन आप साहिवाल ला रहे हैं, तो ये 1000 किलोमीटर का फासला है. तो हम कहेंगे कि 1000 टन्स हैज ट्रेवल्ड, 1000 टन किलोमीटर्स हो गया ये. तो इसी तरह जब एक पूरी ट्रेन लोड निकलती है 2400 टन्स की फॉर साहिवाल, कोयला ला रही है वो फॉर दिस पावर प्लांट इन साहिवाल, 2400 और 1000 किलोमीटर है, तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपको दे देगा टन किलोमीटर्स, नंबर ऑफ टन किलोमीटर्स. तो ये इसीलिए हमारे पास पाकिस्तान में 140 बिलियन टन किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहा है फ्रेट. ठीक है, तो ये एक यूनिट है which determines the volumes. ओवरऑल किलोमीटर. जी सर, ये पर किलोमीटर है या ओवरऑल किलोमीटर्स है? ये तो टोटल बिलियंस ऑफ टन, 140 बिलियन टन किलोमीटर, मतलब ये है कि 140 बिलियन टन इतने किलोमीटर आगे गए. ये 1 किलोमीटर के लिए 1 टन जाता है ना, तो वो टन किलोमीटर हो गया. 1 टन अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो 2 टन किलोमीटर हो जाएंगे. अगर वो 1000 किलोमीटर जाएगा तो 1000 टन किलोमीटर हो जाएंगे. तो इस तरह जो वॉल्यूम्स जा रहे हैं फ्रेट में, वो 140 बिलियन टन किलोमीटर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं. ये कंटेनर्स हैं, ऑयल है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट, जो भी चीजें, ये मूवमेंट है जनरली. तो ये हमारा एक वॉल्यूम चल रहा है. देन ऑन द पैसेंजर साइड वी हैव पीपल मूविंग 540 बिलियन पैसेंजर किलोमीटर. अब इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करें. पैसेंजर ट्रैफिक कितनी है? अब वन कुड से कि जी मिलियंस में कह दिया, बट वो मिलियंस में कहने से कोई मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि रेलवेज कैरीड अबाउट 60 मिलियन पीपल लास्ट ईयर. एट वन टाइम रेलवेज वुड कैरी 140 मिलियन पीपल. जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन पूरी 140 मिलियन नहीं थी ना, रेलवेज 140 मिलियन लोग ले जाते थे. लेकिन ये 140 मिलियन लोग कहां जाते थे वो फिर दैट इज द क्वेश्चन. कितना दूर जाते हैं,
तो वो आपके फिर टन किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर बढ़ते हैं। तो ये 540 बिलियन पैसेंजर किलोमीटर्स लोग जा रहे हैं। और पाकिस्तान का जो टोटल एनवायरनमेंट में एमिशंस हो रही हैं वो 15% ट्रांसपोर्ट से आ रही हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये एमिशंस को लो रखना, किस मोड से आपने जाना है ताकि इसको लो रखें, किस मोड में इनएफिशिएंसीज हैं जहाँ पे एमिशन ज्यादा हो रही हैं, एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं। आजकल दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनवायरनमेंट। और ये कार्बन एमिशंस को लिमिट करने के लिए देन यू नीड टू लुक एट विच मोड इज एफिशिएंट, कहाँ पे खराबी है। अब हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ट्रक हैं पुराने को बेडफोर्ड के या 2XL ट्रक्स कंप्लीटली इनएफिशिएंट, ये दुनिया में नहीं है, फ्रेंकली खत्म हो गए। बड़े कम जगहों पे, छोटी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, अदरवाइज हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस भी ले जाते हैं। तो ये इनएफिशिएंट सिस्टम्स हैं। अगर यही बल्क, जैसे वो ट्रेन आपको दिखाई है, वन ट्रेन कैन मूव आउट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, आपका कार्बन एमिशंस बहुत कम हो जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू है। आजकल लाहौर में हमारा बड़ा इशू है, आपने देखा होगा पंजाब गवर्नमेंट हैज क्रैक डाउन ऑन एमिशंस नाउ, और वो गाड़ियों को पकड़ रहे हैं स्पेशली जो कि इनके इंजन ठीक नहीं है, जो कि धुआं दे रही हैं या इनएफिशिएंट है। और ये कहीं आके ना आगे आई लेट यू नो, एक एग्जांपल है बट दैट विल टेक टाइम। कैलिफोर्निया में देयर इज वन सिटी वेयर द एनवायरनमेंट में जो कार्बन एमिशंस ज्यादा होगी, उन्होंने इसको एड्रेस ही ऐसे इकोनॉमिकली किया इस ट्रांसपोर्ट के इशू को और एनवायरनमेंट के इशू को, कि जबरदस्त तरीके से उन्होंने कार्बन्स को निकालने के लिए एक क्रैकडाउन किया पुरानी गाड़ियों के ऊपर। वो खैर वी विल टॉक ऑफ इट सम टाइम लेटर। वेरी इंटरेस्टिंग केस है वो, स्टडी एक। नेक्स्ट। तो वी आर टॉकिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन पाकिस्तान। तो अभी आप मैं रोड्स पे आ जाता हूँ। जस्ट अब बात वही है, मोड्स हैं। इधर हमने पाकिस्तान में देखना है क्या है। पाकिस्तान पोजीशन इन द वर्ल्ड इज 22nd। हमारे रोड्स काफ़ी हैं, होने ज़्यादा चाहिए फ्रेंकली। ये एक ज़माने में मार्केट टू फील्ड टू मार्केट रोड्स ये बने एग्रीकल्चर में, उससे काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स हुआ था। ये साथ साथ बनने चाहिए। रोड नेटवर्क की हमारी जो पाकिस्तान में लेंथ है दैट इज 2,63,000 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज 13,000 किलोमीटर। आवाज लैग कर रही है, लैग कर रही है या आ ही नहीं रही? सर अब आई आवाज। अच्छा गुड। तो नेशनल हाईवेज और मोटरवेज, अब ये फेडरल गवर्नमेंट के रोड्स हैं, ये 13,000 किलोमीटर्स हैं। प्रोविंशियल रोड 93,000 किलोमीटर्स हैं। रेस्ट आर डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स। ये कुछ रोड्स डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, कोई रूरल म्यूनिसिपैलिटी के भी रोड्स होते हैं। तो ये सिर्फ जस्ट ट्राइंग टू लेट यू नो कि ये रैंकिंग टू इम्प्रूव विद कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स स्पेशली अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेंट्रल एशिया रीजन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। पाकिस्तान में दो बॉडीज हैं, वन इज सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच इज बेंट ऑन कनेक्टिविटी। और वो क्या है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन योर रेलवेज, दे वांट टू इन्वेस्ट इन योर रोड्स। और ये मोटरवेज जो 2-3-4 बनी है, ये सीपैक के थ्रू बनी है। ये अभी लेटेस्ट आपका फ्रॉम इस्लामाबाद टू DI खान हाकला से जा रही है, वहाँ ये बन गई है। देन यू हैव हवेलियाँ थाकोट रोड, देन यू हैड दी सक्खर मुल्तान मोटरवे, ये सीपैक के थ्रू बनी है। गुड, इस तरह और भी बननी चाहिए। देन देयर इज अनदर बॉडी जिसको कैरेक कहते हैं, CAREC, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको मॉनिटर करता है, स्पॉन्सर करता है। सेंट्रल एशियन रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। The World Bank and the Asian Development Bank, they want you Pakistan to be connected to Central Asia. They want you to be connected to Afghanistan. Of course, Central Asia जाओगे तो अफगानिस्तान ही पहले आएगा ना। And then they want you to be connected to China. ये नहीं है कि उसके खिलाफ है, ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन चाइना ने they took this big initiative of one belt one road, और उसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। And we are fortunate, we keep saying this is a strategically located country, and yes, of course we are strategically located, but we have done nothing about it. So now here is an opportunity through CPEC and Central Asian Regional Economic Cooperation that you get loans from them, you connect your country to the neighboring countries, and then this will allow movement of goods
and people from one place to another, you earn money on it, on transit. It's a lot of money to be made here. But you need connectivity first. And then we are lucky that we are connected to Iran in the west, we are connected to Afghanistan in the northwest, we are connected to China, we are connected to India. Couldn't be better, frankly. India and China are huge countries. So prospects for transportation, again, very huge. Potential for transportation, very huge. Afghanistan, as I keep saying, completely dependent, landlocked, dependent on Pakistan. So it has to be connected. And the world bodies want you to be connected, and they want to give you money for it. Connect kare. And why are they giving you money? Because they know there will be a return on this. Because business, when it thrives, it will repay everything. Next. Next. Achha, then we in Pakistan, then we have the Ministry of Railways on the railway side. It is a separate ministry. Uska apna minister hai. He is responsible only to the Prime Minister. Now, when you have these separate ministries, iske apne masle masail. Then we have provincial railways. How do we have a provincial? This is the first time Orange Line aa gayi. Orange Line is completely owned by the Punjab government. The loans have been taken by the Punjab government. इसमें कोई हमारा काम नहीं है. It is the Punjab government which is doing it, managing it. Then we have the Karachi Circular Railway. The land is with Pakistan Railways, but Pakistan Railways, frankly, is not a. This is now my view. It is not a good body or a good institution to manage urban transport. So it would be preferable if the land is given over to the provincial government, hai to government, and you're doing it for the people. Let them handle it. We can give them all the technical know-how, or we can even run the trains for them, but we can't own it. Then we have the Greater Peshawar Rail Mass Transit System. Then we have, once these come in, there I am 100% sure more railway lines will come into Lahore and Karachi and cities like Faisalabad and Multan and Hyderabad and Islamabad, Rawalpindi. Ani hai, these have to come, these mass transit systems. Then in the irony is that we have a Ministry of Communications. Us Ministry of Communications, basically it was there to cater for ये है TNT इसको कहते थे, telegraph and telephone. Telephonic communication था, but the motorways उनका हिस्सा है और वो national roads उनका हिस्सा है, उनका NHA इनका under Ministry of Communication आता है. Then we have a great role in the transport sector. ये provincial governments का है. Roads or expressways. ये your Swat Expressway is ownership उसकी provincial government के पास. तो ये बड़े important stakeholders हैं. इनका federal government के साथ कोई ताल्लुक नहीं. Provincial roads का और some expressways. Next. Then municipal corporation. Karachi is a huge metropolis. इसी तरह लाहौर, इसी तरह पेशावर, इसी तरह पिंडी. तो इसके जो internal municipalities हैं उनके अपने roads हैं. उसके साथ फिर ना NHA का कोई ताल्लुक है, ना province का कोई ताल्लुक होता है, वो खुद ही अपना ही बनाते हैं. और काफी roads हैं इसको kilometers में. When you look at it, the kilometerage may be huge kilometers. Then on the shipping side, we have a Ministry of Ports and Shipping. And Ministry of Ports and Shipping, itna bada, frankly, they maybe they're in one building, but railways के साथ disconnect है, communication के साथ disconnect है. उनका अपना minister है, उनका अपना secretary साहब है, उनकी अपनी planning है. At times, this planning or this government may, it is very, very important to look at, especially when you are doing policy, कि interdepartmental linkage is बड़ा जरूरी. You can't work in isolation. But since these are separate entities, इनका overall कोई head नहीं है, तो ये isolation में कभी-कभी चली जाते हैं, कभी-कभी minister की egos आ जाती हैं बीच में. At times, छोटी-छोटी बातों में egos. तो ports and shipping में Pakistan National Shipping Corporation है, as I've already said, not a big, huge department, but it is gradually decrease होता रहा है और इनकी efficiencies ठीक नहीं रही. Then we have, of course, the Karachi Port Trust. This ये Karachi Port है जो manage हो रहा है from under the Ministry of Ports and Shipping. Then we have a new port, जो new तो नहीं, it is very old now, Port Qasim.
Then we have Gwadar port coming up, commercial port होगा इंशाल्लाह. ये देखेंगे CPEC इसको बड़ी अहमियत देता है. CPEC, let me tell you, China-Pakistan Economic Corridor, the Chinese are looking at CPEC from two angles. One is the ML1 upgradation and the other is Gwadar development. ये उनकी अहम चीजें और ये उनकी strategic interest है. लेकिन somehow गवादर भी मैं देख रहा हूँ कुछ खास तरक्की नहीं की इसने, ऐसे ही चल रहा है बस. This should have been on a very fast footing और होना चाहिए था. Then we have a Ministry of Civil Aviation. ये बिल्कुल अलग मिनिस्ट्री है. लकीली पहली दफा ये हुआ कि जो मिनिस्टर है अभी ख्वाजा साद रफी, he is Minister for Railways as well as Minister for Civil Aviation. तो at least under one minister दो महकमे तो आ गए. तो ये क्या करते हैं, they manage the airports and they manage the airlines और प्राइवेट एयरलाइंस को देखते हैं, रेगुलेट करते हैं. तो ये इनका काम है. एंड लुक एट द नेचर ऑफ जॉब इन सबका बिल्कुल डिफरेंट जॉब्स हैं, लेकिन है ट्रांसपोर्टेशन. देन ऑफ कोर्स पाइपलाइंस में वी हैव सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड एंड वी हैव द सुई सदर्न गैस लिमिटेड. एंड देन पार्को है जो तेल को आगे पीछे कर रही है. जन रिफाइनरीज के नेशनल रिफाइनरी का ऑयल पाइपलाइंस हैं और ये कुछ अटक ऑयल की है. तो ये चल रहा है पाइपलाइंस में. नेक्स्ट. अच्छा, शिपिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन फ्लीट कंप्राइजेस ऑफ 11 वेसल्स ऑफ वेरियस टाइप्स. इसमें 5 बल्क कैरियर्स हैं, 4 एफ्रामैक्स टैंकर्स हैं. जी आवाज खराब हो रही है, आवाज बहुत लैग कर रही है. अच्छा, बाकियों को आ रही है कि नहीं? सर अब ठीक हो गई है. अच्छा चलो मैं फिर करीब हो जाता हूँ. तो ये पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, जैसे मैंने कहा ना, लगता तो बहुत बड़ा कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग, तो 11 वेसल्स हैं, 5 उसमें बल्क कैरियर्स हैं, 4 एफ्रामैक्स ये छोटे शिप्स होते हैं, 2 LR1 क्लीन प्रोडक्ट टैंकर्स ये छोटे छोटे शिप्स हैं. डेड वेट इनका 831 मेट्रिक टन्स है. 831. मैंने जैसे कहा ना कि देयर आर शिप्स जो कि 1 मिलियन 2 मिलियन टन्स उठाती हैं. तो आप सोचें हम टोटल 8 लाख उठा रहे हैं, हमारे डेड कैपेसिटी जो है, डेड वेट कैपेसिटी. तो ये नॉट मच फ्रेंकली. नेक्स्ट. देन थोड़ा सा पाकिस्तान रेलवेज, वो व्हेन आई वाज टॉकिंग इन द प्रीवियस थिंग वो रेलवेज है, रेलवेज. दिस इज नाउ पाकिस्तान रेलवेज. ठीक है, इज सिंगल मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द पब्लिक सेक्टर. बाकी इसमें बिगेस्ट, इसका ट्रैक लेंथ है 7791 किलोमीटर्स. ये पहले 8000 था, अब वो 8000 से कम हुआ है. डजंट मैटर फ्रेंकली, इससे और भी कम होना चाहिए. बाकी एवी किलोमीटर्स ये हैं, इसमें कोई ट्रेन नहीं चलती. the railways has 473 किलोमीटर. the locomotives ये आप ईयर बुक में देखेंगे, वो ऑनलाइन जाएं आपको सारे डाटा मिल जाएंगे. पैसेंजर्स कैरिड 44 मिलियन. एक जमाने में एज आई सेड वी कैरिड 145 मिलियन पीपल और ये 29 बिलियन पैसेंजर किलोमीटर्स हम उठा के ले जाते हैं. फ्रेट कैरिड 8 बिलियन टन किलोमीटर्स, यानी 8 मिलियन टन तकरीबन आप समझ लें कि हमारा वेट उठाते हैं, वो 1000 टन तक जाता है, तो 8 बिलियन टन किलोमीटर्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट रेलवे कैरीज लेस देन 4% ऑफ योर एंटायर transport goods that are goods and passengers that are being transported. Now this is a serious issue. ये अब गवर्नमेंट की पॉलिसी लेवल पे कि जी पहले ये 20, 25, 30%, 40% रेलवे उठाती थी. जैसे ही रोड नेटवर्क डेवलप होना शुरू हुआ, now we have come down to less than 4, almost 4. Now the government's policy statement is, which came about 5, 7, 8 years ago. They said that the railway needs to increase its role in transportation of goods and passengers, and they need to increase from 4% to 20% within 5 to 10 years. ये उनका वो था कि जी करें इसको. Now how do you go from 4% and what is 4%? 4% जो मैं कह रहा हूँ वो यही है कि passengers carried 44 million, अब we are carrying about 60 million. ये थोड़ी सी improvement आई है ट्रेन में, तो वी आर कैरिंग 60 मिलियन पीपल.
And इसी तरह because of freight in Saiwal, in the coal fired plant, ये जो 1320 megawatts का, we are carrying about 6-7 million tons of cargo coal to them. उसकी वजह से now we are carrying 8 billion ton kilometers. So ये कोई but if you want to go from 4% of the transport sector to 20%, you just can't do it without upgradation of ML1. And that is why the ML1 project is so important. And that is why it is the only way that you can meet the government's sort of policy decision for say 20% transport railway uthaye. And why are they saying it? They're saying it because this is an efficient way of doing it. This is a more safer way of doing it. This is a more environment friendly way of doing it. That the government knows. But somehow, since railways was the priorities were always, somehow lower priority was given by different governments. Ye halat ho gaye, now they want कि जी कुछ करें, so ML1. And luckily, we have China under CPEC, where we can, hope to get some kind of financial and technical aid. Next. Then air पे आ जाना. Now air में what do you have? What does Pakistan have? PIA has 26 aircrafts. अब when I say 26, maybe इसमें ऊपर नीचे 2, 3 का 4 का हो. This may be not the latest figure. ये maybe last year का होगा. एक जहाज इधर ऐड हो गया, एक उधर ऐड हो गया, एक निकल गया. But generally we have this figure. Our PIA was founded in 1946 as Orient Airways based in Calcutta. फिर ये इधर shift हुआ Orient Airways and we जब पाकिस्तान बन गया तो nationalize हो गया and we started calling it the Pakistan International Airlines Corporation. PIAC कहते थे इसको. First Asian airline to operate jet aircraft, induction of Boeing 707 on 7 March 1960. The way we started PIA was really very good, very efficient. The service was very good, and people used to prefer it. Was a preferred mode of transport in days gone by. 64 में first non-communist airline to go into China. China के साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है. Vital role in the establishment of Emirates Airlines. 85 में this is not now the only airline. Frankly, हमने बहुत airlines को help किया. मुझे याद है Malta Airlines और Emirates Airlines 85. We started helping them. Look where Emirates has gone, where Qatar has gone, where all these airlines have gone, and where have we gone. 18 domestic destinations and 25 international destinations where we travel now. In 2020, issue of fake license to pilot banned by Europe. If you remember, there was a statement by our minister in the assembly saying that the license of the pilots is fake and it is forged or galat hai or fraud hai. Usse the airline industry was badly damaged, frankly. Your PIA was badly damaged. In fact, the reputation uski badi kharab hui, uski credibility badi kharab hui. And even your sort of flights to Europe were banned. I remember now the other day, I think there's some breakthrough. Yes, government ने भी किया है. साद रफीक is a dynamic man. इसने कुछ किया आगे कर दिया. ये वो पहले गुलाम सरवर खान के इस policy stupid किस्म के issues पे we had to face a lot of flack. Next. Next. Here, next. अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर और इकोनॉमिक ग्रोथ हम कर क्या रहे हैं? वाई ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जितनी बातें हम कर रहे हैं, as I said, it is part of the economy and it is a very, very vital part of. Without transport, frankly, your economy will just stand still. कुछ नहीं होगा. Unless goods and people move from one place to another, unless your manufacturing industrial units are connected to the demand area, supply और demand को chain को आपने मिलाना है. Unless your ports are connected to the hinterland, वरना ports कुछ चीज भी नहीं है. आपका अगर कराची पोर्ट है, if it is not connected to Upper Sindh, if it is not connected to Upper Punjab, if it is not connected to KP,
क्या पोर्ट होगा? तो ये as I said, it is a very, very vital part of your economic system. And people say that in economics, the growth of the transport sector has determined the growth of the economy. ये भी लोग कहते हैं. तो ये logistics and transport, logistics और transport में फर्क क्या है? Logistics में ये आ जाता है कि you start sort of talking of the storage areas, the terminal areas, storage करना, ये और supply chain थोड़ी सी transport से हट जाती है, उधर store का भी आप ख्याल करते हैं, इसको logistics कहते हैं. और transport इनका key role है. Without this you just can't go ahead. Frankly मेरा अपना view ये है कि थोड़ा सा हम ये इसको warehousing कहते हैं, that you have these huge bulk warehouses जहाँ fertilizer store हो, जहाँ cement store हो, जहाँ भी wheat store हो, और वहाँ से वो ये efficient तरीकों से transport से हैं. Efficient from my point of view is rail of course, और वहाँ से भी ये distribute हो trucks के ऊपर, वो हम lack कर रहे हैं पाकिस्तान में. Efficient transport system and infrastructure a measure of development. वो कहते हैं the more you are efficient, and this is true any country you go, the first thing you see is the transport sector. Whether it is the airport, whether you want to get out of the airport, you get an impression of the roads and the motorways and the connectivity. इसी को देखते हैं. And you see the trains, you see the buses, you only that then you know that those are measures of development. तो आपके image ये build up करता है. An efficient system, infrastructure और उसके vehicles अगर efficient हैं, basic thing is in the economy, the cost of doing business. Cost of doing business for a person in Peshawar is different than for the person sitting in Karachi. उसका कोई transportation के खर्चे ही नहीं. So that is why you need a very, very efficient, cost-effective means of transportation, which can then enable this person sitting maybe 1,000 and 1,500 kilometers away from the port to compete with this man. So वो efficient cost of doing business को नीचे करता है. An efficient railway system will reduce your cost of doing business. आपको काफी competitive बनाता है. दूसरा ये, there was this person I know in my village. He used to tell me that every time he brings this 10-wheeler truck from Karachi to Pindi, he has to pay 14,000-15,000 rupees to the police. So I said, "Kaun si police? You're talking of motorway police?" He said, "Yes." So I was surprised. I said, I thought they are not corrupt. Itna wo nahi kar. Really, sir, I'm not saying. They give me a receipt for it, but I have to pay because I'm overloaded. So that 14,000-15,000 rupees is added to the cost. And wo overload chalata tha this 10-wheeler ko, only then he made it financially viable. He says, if I don't overload, then it is not viable for me. मुझे कोई फायदा नहीं है इसका. Now by overloading, the axle load he sort of goes beyond the axle load. It then damages the road, and it damages all the motorways, and it damages and the road which has been made for 10 years, it goes bad in 5 years, and then again we send our engineers और उसको बनाते हैं. So that way, this is all, ये सारी economy में ये खराबियां हैं. How do we address it? Some of it is administrative, some of it is of course technical. लेकिन ये government को ये बड़ा जरूरी है कि cost of doing business को नीचे लाए. उसके लिए वो different चीजें, कौन सा efficient mode of transport है, आप सामान किस चीज से ले जाते हैं. If for Saiwal, if you had sort of arranged a trucking system, ये एक nightmare होता government के लिए. Government के लिए क्या, पूरे मुल्क के लिए. आप सोचें hundreds of trucks